अस्सलामुअलैकुम। हबलुल वरीद इज़ हियर। जैसा कि आप सब जानते हैं ppsc के टेस्ट हो रहे हैं और लेक्चर और एजुकेशन का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। तो आपके साथ मैं एक लार्ज कंटेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा टेस्ट की प्रिपरेशन में। इसके साथ साथ सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट के साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक लार्ज कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस सारे कंटेंट से फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है। फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द वर्ड फिलॉसफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ करेक्ट वाला बोलूँगी। उसकी वजह ये है कि जब आप वेरी फर्स्ट टाइम चारों ही ऑप्शंस को याद करके बोल के याद करने की कोशिश करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा करेक्ट था। इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपके माइंड में आ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को याद करें और सेकंड रिवीजन में आप सबको देखें, फिर उसमें से चेक करें कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम पहुंचे थे, द वर्ड फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। फेलन मीन्स लव। सोफिया इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स विजडम। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन was written by Davy. According to Dash, philosophy is the acquisition of knowledge. Socrates, the branch of philosophy concerned with reasoning, is called logic. The knowledge which a person gains by his thinking power is intellectual. The knowledge which a person obtains without any effort is called instinct. The process which brings out hidden potential of an individual is called education. The word epistemology means knowledge. The word epistemology is derived from Latin. The branch of philosophy that deals with the nature, origin, and scope of knowledge is epistemology. Ontology deals with values. फिलॉसफी की 4 ब्रांचेस हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी और 4th वन कोई है जो मेरे माइंड में नहीं है। Pragmatism is also known as progressivism. Which of the following is concerned? A teacher-centered philosophy. Essentialism. Which branch of philosophy studies issues concerning art and beauty? That is epistemology. That is aesthetics. Which branch of philosophy involves questions related to values? Morality. Metaphysics can be defined as beyond the nature. John Dewey brought a revolution in the education system by his philosophy of pragmatism. Aesthetic has to do with beauty. The concept of educating child on the basis of his interest and inclusion is called psychobase. Ethics can be defined as ideal conduct. Learning about various schools of thought is the approach to philosophy. Descriptive. Learning about various schools of thought is the approach to philosophy. Descriptive.
Where do the forms exist according to Plato? Mind. Where do the forms exist according to Plato? Mind. How the forms are apprehended according to Plato? By reason. Plato was an idealist. Reality does not exist in this physical world is said by Plato. Plato wrote the famous book, The Republic. The concept of universal education was given by John Dewey. The realism was presented by Aristotle. तो यहाँ पर अब एक बात माइंड में रख लें कि सुकरात जो था वो प्लेटो का टीचर था और प्लेटो का स्टूडेंट आगे से अरिस्टोटल था। तो इन्होंने प्लेटो अरिस्टोटल का टीचर था, इसने उसी से सब कुछ सीखा, सब कुछ लर्न किया, बट एट द एंड वो प्लेटो के अगेंस्ट, उसने अपनी जो स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया वो प्लेटो के अगेंस्ट था, उसके उसके कॉन्सेप्ट्स के टोटली ऑपोजिट था। Which views about truth is common to all pragmatists? Truth is what works for the individuals. Which education enables individuals to choose the right path and become good citizens? Formal education. Huching gave the concept of liberal education. Child development should be according to the developmental law. Froebel. Child development should be according to the developmental law which is given by Froebel. Tabula rasa literal means blank slate. इससे इसके मतलब कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि एक खाली तख्ती या खाली स्लेट हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी डेवलपमेंट होती जाती है तो कॉन्सेप्ट्स उसके माइंड में जमा होना शुरू हो जाते हैं, बट फ्रॉम द बिगनिंग वो एक ब्लैंक स्टेट होता है। स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी डील्स विद डेवलपिंग थ्योरी। नेक्स्ट इज prescriptive philosophy deals with right and wrong. Next, analytical philosophy deals with assessment. Next, ontology in philosophy deals with reality. जैसा कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ontology वो philosophy की ब्रांच है और ontology डील करती है reality से। Ontology is also called as metaphysics, जिसका सेकंड नेम है। Essentialism get their aim of education from traditions. Naturalism rests on the idea of Rousseau. The analogy consists of personal choice in existentialism. Most of scientific knowledge is rest on sense perception. Knowledge acquiring through reasoning is called rationalism. Next is in intuition, knowledge is acquired by perceptive insight. Next, seeking experts' opinion is a source of knowledge called authority. Philosophy of education, which emphasize everlasting reality, perennialism. पेरेनियलिज्म में ग्रेट बुक्स को स्टडी किया जाता है, पुराने ख्यालात के को ही सही समझा जाता है। ये समझते हैं कि रियलिटी इज़ कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होती। सो नेक्स्ट इज़ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकसेस ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज़ कॉल्ड
Reconstructionism. Life is continuous changing process is the base of educational philosophy. Progressivism. Reforms are necessary in all walk of life is focused in Reconstructionism. Philosophy of education, which makes man responsible for the actions and experiences, is called existentialism. Next, study of great books is at the core of perennialism. हम पीछे भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं. perennialism में ग्रेट बुक्स को स्टडी किया जाता है. Which one is not among major exponent of perennialism? William Bagley. The school should be run on democratic lines held by progressivism. Next, what is the most important element of informal education? Media. जैसा कि आप जानते ही हैं, मीडिया का ही दौर दौरा है. सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका बहुत चर्चा है और बहुत यूजेज है हमारी लाइफ में. बड़े बूढ़े बच्चे सभी मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मीडिया के थ्रू आप कोई भी मैसेज बड़ी ही आसानी से ऑडियंस के माइंड में फिक्स कर सकते हैं. जैसे कि कमर्शियल्स को ले लें. कमर्शियल्स बज़ाहिर तो लगता है कि हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे, लेकिन वो उसकी रेपुटेशन, कमर्शियल्स की रेपुटेशन इतनी होती है कि हम वाकई में उस प्रोडक्ट के कन्विंस हो जाते हैं, हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो इसी तरह से मीडिया के थ्रू हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कंटेंट लर्न करते हैं, बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं. तो नेक्स्ट इज़ Freire is associated with Reconstructionism. Paulo Freire is associated with Reconstructionism. Integrated curriculum designing is associated with the philosophy of progressivism. Next, values are intrinsic in the human being. It is claimed by idealism. Next, the education process revolves around the child is the philosophy of progressivism. Revolves around the child means जो philosophies child centered होती हैं उसमें बच्चे की ही पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है. बच्चा क्या चाह रहा है, क्या सीखना चाह रहा है, सब कुछ बच्चे के मर्ज़ी के मुताबिक रखा जाता है. और जो टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ीज़ होती हैं उसमें सारी चीज़ें टीचर की फेवर में होती हैं कि जैसे वो पढ़ाना चाहे, जो चीज़ें पढ़ानी है वो पढ़ानी ही पढ़ानी है. टीचर जिस तरह से उनको हैंडल करना चाहे, ऐसा इस तरह से होता है. नेक्स्ट, द टीचर इज़ द change against the philosophy of Reconstructionism. Next, formative evolution, ongoing feedback and authentic assessment is the process of evolution. Reconstructionism. In stating the purpose of education, pragmatists would probably stress the need for experience in democratic social processes. Next, what cannot be thought cannot be real is according to idealism. Next, the existentialist teacher is most likely to view teaching as a performance to evoke student insight or learning. Next, essentialism stress upon mental discipline. Essentialism stress upon mental discipline. Next,
Normally, philosophy may be prescriptive and analytical. Next, who says human nature remains the same everywhere, hence education should be same for everyone? Perennialism, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो पेरेनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो पुराने ख्यालात पे मबनी है। वो ये समझते हैं कि तमाम ह्यूमन बींग्स सेम हैं, इसी तरह से उनकी नेचर सेम है, इसीलिए उनके लिए कंटेंट भी सेम होना चाहिए, एजुकेशन भी उनके लिए सेम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम ह्यूमन बींग्स, तमाम बच्चे क्लास में मौजूद बच्चे डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, हर किसी की डिफरेंट नीड्स होती हैं। सो प्रैक्टिकली अगर देखें हम तो ये भी बहुत मुश्किल है कि हम हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस करें, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पेरेनियलिज्म के लोग ये कहते हैं क्योंकि बच्चों की नेचर एक है, इसलिए उनको एजुकेशन भी एक जैसी ही देनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च इज द मेथड ऑफ टीचिंग, रिकंस्ट्रक्शनिज्म। नेक्स्ट, nature of scientific knowledge rests on empiricism. Next, according to naturalism, the aim of education is self-expression. Next, the application of philosophy in education may include objectives, teachings, and curriculum. All of them. Next, ethics and aesthetics are components of axiology. Next, logic includes B and C, means logic include deductive and inductive. The function of educator is to lead the child near reality is the educational philosophy of realists. Next, authentic knowledge is gained through empirical experiences. Next, for the learning of students progressively, teacher put more emphasis on practical education. Next, lecture method is a choice of idealist teacher. Lecture method is the choice of idealist teacher. Classroom environment will be teacher centered if teacher is idealist. Next, for instructions, pragmatist teacher tend to rely heavily on problem solving and project method. Next, an important question of philosophy is what is universe? Next, education should be life itself, not a preparation for it. Is the characteristics of educational philosophy of progressivism. प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ द लाइफ इटसेल्फ, ना कि आप उसकी तैयारी का नाम नहीं है, एजुकेशन इज़ द लाइफ इटसेल्फ. नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट अ प्रिपरेशन ऑफ इट. ये कहते हैं पेरेनियलिज्म में. आप देखें ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं. प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ, उसकी लाइफ होनी चाहिए, ना कि उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. जबकि पेरेनियलिज्म वाले कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट अ प्रिपरेशन ऑफ इट, कि ये लाइफ नहीं है, एजुकेशन जो है वो उसकी प्रिपरेशन है. दोनों का ओपिनियन एक दूसरे के ऑपोजिट है. नेक्स्ट, टीचर्स रोल इज़ नॉट टू डायरेक्ट बट टू एडवाइस. प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट में, फिलॉसफी में क्या होता है कि टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करना होता है, गाइड करना होता है. नेक्स्ट, moral development is the curriculum of perennialism. Next,
Global issues are the part of the curriculum of the theory of Reconstructionism. Next, the superior pedagogical skills of teaching are stressed in essentialism. Next, the teacher is the authority figure in perennialism. Teacher centered है ये. Next, the non punitive classroom management is the characteristics of existentialism. Next, computing is the curriculum of essentialism. Next, the IQ test is the evaluation process suggested by essentialism. Open classroom is the classroom management suggested by the existentialism. Privacy classroom management is suggested by the existentialism. Next, essay type examination is the evaluation process suggested by perennialism. Next, the great method of teaching by naturalist is प्लेवे मेथड कि बच्चे खेलते खेलते सीखें, खेल खेल में उनको कॉन्सेप्ट्स दिए जाए, नेचुरलिस्ट ये कहते हैं. नेक्स्ट, हु सेज परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, essentialism. Next, education should stress education should stress natural law and scientific inquiry belongs to pragmatism. Education should stress individual responsibilities and choices, existentialism. According to the naturalist school of philosophy, teacher is imparted primarily through experiences. Next, the critical thinking is the method of teaching reconstructionism. Next, the the inductive reasoning framework represents the observation, pattern, hypothesis, and theory. Next, the deductive reasoning framework represents the theory, hypothesis, observation, and confirmation. Next, perennialism is based on the philosophy of realism. Next, essentialism is rooted in the philosophy of realism and idealism. Next, progressivism is grounded on the philosophy of progressivism. Sorry, uh, progressivism is grounded on the philosophy of pragmatism. Progressivism pragmatism पे बेस करती है. Next, reconstructionism is originated from the philosophy of pragmatism. Learning for the sake of learning is the goal of education. Perennialism. Learning for the sake of learning is the goal of education. Perennialism वाले कहते हैं. Next, to educate the rational person is the aim of education. Perennialism. Cultivating the intellect of the student is the aim of education. Perennialism. Next, acquisition of cultural literacy is the goal of education. Essentialism. To develop democratic and social living is the aim of education. Progressivism. Next, to educate the child for change and social reforms is the aim of Reconstructionism. Mu'tazila was the school of speculative that flourished in 8th to 10th century AD, where it flourished. B and ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, बसरा एंड बगदाद. नेक्स्ट, सर सैयद फाउंडेड द Mohammedan Educational Conference in 1886. Next, a normative
science explains what ought to be. Next, which of the following approach the ethics issues should be judged on the basis of some universal code? Den- deontology. Next, the mental act, condition, or habit of placing trust or conditions in, sorry, the mental act, conditions, or habits of placing trust or confidence in another shows which of the following option? Belief. Next, literacy. The word ethics stands for study of morality. Okay, Allah Hafiz.